Welcome back, guys. अब हम करेंगे thermal properties of matter. Question 4, paper 2, 5054. Let's start. Question 4. A small glass measuring cylinder of oil is placed inside a freezer where the temperature is minus 18 degrees. Figure 9.1 shows the temperature of the oil varies with time t. This on the x-axis is the time t and y-axis पे temperature. Figure 9.1 shows that it takes 700 seconds for the temperature to decrease from 20 to 10 degrees Celsius. This is 700 seconds from 20 to 10 degrees Celsius. Uh, to 10, but that it takes 1900 seconds to decrease from 0 to 10 minus 10. So 0 to minus 10 ये हो गया और यहाँ से 20 to 10 ये हो गया और इनके डिफरेंस पहले वाला 700 सेकंड्स में हुआ है दूसरे वाला 1900 सेकंड्स में हुआ है बट द टेम्परेचर चेंज इज द सेम अच्छा सजेस्ट व्हाई दीज टाइम्स आर डिफरेंट अच्छा इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल दीज आर टू बॉडीज ऑफ वाटर assume the water is 20 degree celsius हमारे पास एक बॉल है which is 100 degree celsius and we have a ball which is 40 degree celsius assume के सारे factors are same except the temperatures जब आप 100 डिग्री सेल्सियस वाली और 40 डिग्री सेल्सियस वाली बॉल्स को एक साथ फेंकोगे इनटू द वाटर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस बोथ बॉल्स को अगर आप फेंकोगे कौन सी बॉल का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी गिरेगा जिस बॉल का टेम्परेचर द बॉडी ऑफ वाटर से डिफरेंट है ज्यादा फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड 100 और 20 डिग्री सेल्सियस में 80 डिग्रीज का डिफरेंस है while on the other hand 100 आई मीन 40 और 20 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्रीज का डिफरेंस है अगर आपने 100 से 80 डिग्री सेल्सियस को बॉल पे करना है दैट वुड टेक अ मच शॉर्टर टाइम देन 40 टू 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज बिकॉज ये वाला जो टेम्परेचर है दैट इज मच हायर देन द बॉडी ऑफ वाटर एंड ये वाला टेम्परेचर है दैट इज मच सिमिलर टू द बॉडी ऑफ वाटर इसमें 80 डिग्रीज का डिफरेंस है इसमें 20 डिग्रीज का डिफरेंट है अगर हम 40 से 20 डिग्री सेल्सियस का टाइम देखें तो दैट वुड बी मच लार्जर देन 100 टू 80 डिग्री सेल्सियस so that is the reason कि time difference I mean temperature difference between the body of water and the balls are much greater in the ball when it is 100 degrees Celsius rather than when it is 40 degrees Celsius. So as simple as that. Initially hotter initially, cooler finally. Temperature difference between oil and freezer decreases, loses energy faster when or hotter or more slowly when cooled. Exactly like I said. आगे करते हैं. Explain what happens to the molecules of the water oil. Explain what happens to the molecules of the oil. What happens to the level of the oil in the glass measuring cylinder as the temperature decreases from 20 degrees Celsius to 0 डिग्री सेल्सियस सो जो ऑयल का टेम्परेचर है ना 20 डिग्री सेल्सियस पे एट दैट टेम्परेचर जो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री सेल्सियस के ठीक है ना द टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर द पार्टिकल्स हैव मच मोर काइनेटिक एनर्जी देन 0 डिग्री सेल्सियस और आगे वो कह रहे हैं आगे वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू द level of oil in the glass measuring cylinder as the temperature decreases from the level of oil will decrease since आपको मैंने थर्मल एक्सपेंशन का बताया था कि if a body of any substance मतलब solid हो गया liquid हो गया that is provided with heat it will expand but they expand at a different rates so when the body is heated it will expand so in contrary to that मतलब उसके opposite that means if a body is cooled down then it will contract right
अगर एक बॉडी को हीट किया आपने तो इट विल एक्सपैंड, और अगर एक बॉडी से आपने हीट छीन ली है तो इट विल कॉन्ट्रैक्ट. सो द लेवल ऑफ the liquid will decrease. Level decreases, oil contracts, volume fall decreases. Oil slash liquid contracts more than glass. Oil or molecules move closer. अच्छा, determine the melting point of the oil. Melting point of the oil will be, as we can see, minus 10 degrees Celsius. Very simple. Explain in terms of molecules why the temperature of oil does not change between 3600 seconds and 10800. अच्छा, that is because इस इस पीरियड ऑफ टाइम में, इसको हटा देते हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट्स हैपनिंग. ठीक है ना. जब चेंज ऑफ स्टेट हो रही होती है ना, तब द टेम्परेचर डज नॉट चेंज. ठीक है ना. तो दैट इज द रीजन. Attractive intermolecular forces between molecules or liquid solidifies. Intermolecular potential energy decreases as the molecules move closer. Thermal energy lost to freezer. Potential latent heat energy lost. So that is it for this video. I hope you enjoyed. Have a great day. Allah Hafiz.